A very, very, very good morning, all of you. Welcome back on this beautiful journey of discovering the power together. And thank you all once again for being here and for being part of this journey and making this happen. And yes, let's begin. Today, we are going to talk about and discuss the power and creation. And there we go. So before we begin, I would like to just start with a story. और ये स्टोरी को आ, तुम्हें जो उसको मतलब देना है हमें जो उसको अंडरस्टैंडिंग देनी है दैट इज अप टू अस वी कैन गिव दैट so this is a story I had heard many years back. No, it has stayed close to my heart and I'm going to share it to begin this chapter with, to begin this day with. This is a story of finishing your glasses. So एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था एंड लाइक यू नो इन हिज 60s मिड 60s समथिंग who has done everything in his life. बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, बहुत चैरिटी की, परफेक्ट हस्बैंड, इनक्रेडिबल फादर, हर चीज जो तुम सोच सकते हो लाइक यू नो ही हैज डन. एंड देन फाइनली ही रीचेस अ स्टेज इन हिज लाइफ वेयर ही इज लाइक बस मैंने सब किया, मेरा जो भी काम था वो मैंने किया. Now I want to just go inwards and move to spirituality. And he had heard of a guru somewhere far in mountains. And he's like बस मुझे वही गुरु चाहिए. बहुत लोगों ने बोला वो गुरु शिष्य नहीं लेते, वो किसी को भी नहीं मिलते, यू नो डोंट गो देयर, ये वो ये. बट ही इज लाइक नहीं, मैं तो बस उनको ढूंढ के रहूंगा और बस मुझे अभी स्पिरिचुअलिटी में जाना है. अभी मैंने सब कर लिया, आई जस्ट वांट टू डू दैट नाउ. एंड ही गोज इन सर्च ऑफ दैट गुरु एंड लाइक यू नो बहुत बहुत पहाड़ ढूंढे, बहुत माउंटेन्स ढूंढे. एंड फाइनली आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ सर्च he found his cave. And you know बस वो गुरु के पैर में पड़ जाता है कि बस take me now, I'm ready, take me with you. And the guru is like, no, finish your classes. He's like, what? No, बस मेरा सब हो गया, just take me. And जब भी अगर गुरु बोलते हैं आफ्टर हिज रिपीटेड इंस्टेंसेस जस्ट वन लाइन, गो फिनिश योर क्लासेस फर्स्ट. एंड फाइनली वहां से थक हार के, यू नो बिकॉज गुरु इज जस्ट नॉट एक्सेप्टिंग हिम, वो फाइनली घर आते हैं, you know, dejected, tired of months of walking, searching, looking, being rejected by the guru, with that frustration कि क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं समझ रहे हैं. एंड घर आते हैं, टिंग टोंग एंड बीबी ओपन्स द डोर एंड शी इज लाइक अरे आ गए, बोला था मत जाओ, ये वो ये, यू नो शी इज जस्ट गोइंग ऑन हर रैंट के ये सब गुरुज के चक्कर में मत पड़ो, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड is he's already so angry and unhappy and you know he just fully lashes out at her like तू चुप बैठ, छोड़ दे जो है, you know. And becomes like you know very nasty. In that fight it becomes nasty. And suddenly he just goes into that old guest bedroom and you know he just locks himself up and he's just so angry and frustrated and tired. और अभी तो बीवी से भी झगड़ा हो गया. एंड बाहर बीवी रो रही है, चिल्ला रही है, बच्चों को फोन कर रही है, रिलेटिव्स को फोन कर रही है, इनको पता नहीं क्या हो गया है, कौन से गुरु के चक्कर में पड़ गए, यू नो ये हो गया वो हो गया. एंड ही इज अंदर और फ्रस्ट्रेटेड लाइक व्हाट इज दिस गुरु सेइंग. एंड सडनली उनको याद आता है कि अच्छा हाँ, बहुत साल पहले, प्रॉब्ली डेकेड्स बैक, जब लाइक यू नो आई वांटेड टू बी दिस पर्सन, दिस सोसाइटी में रिस्पेक्टेड पर्सन और रिस्पेक्टेड फादर, मैंने कॉलेज के टाइम के कुछ ओल्ड मॉन्क्स कहीं कोई अलमारी में, पुरानी अलमारी में छुपा के रखे थे. एंड यू नो अभी तो मौका भी है, दस्तूर भी है, बीवी भी साथ नहीं है, गुरु भी साथ नहीं है, सो ही जस्ट यू नो टेक्स दोस बॉटल्स आउट एंड gulps down one glass, two glass, and before we know it, he's not just finishing glasses but bottles. And you know, बाहर तब तक बच्चे आ गए हैं, कुछ relatives आ गए हैं, फोन आ रहे हैं, क्या हो गया है पापा को, क्या हो गया है. And he goes and like you know, अभी तो there are no inhibitions also, so जाके सबके साथ he just blasts out. Probably a very respected, very loved, very sorted person overnight becomes this angry, unhappy, or whatever person. But and finally, कुछ महीने बाद again he goes back to that guru and he's like, बस guru बस ले लो मुझे. And guru is like, yes, you're ready now. So I don't know your story, whatever you want to make out of it, but it has stayed close to my heart that everything is serving that purpose. किसको भी हम लेबल नहीं कर सकते, और एक भी चीज को एक्सक्लूड करेंगे ना, वो हमें अटका के रखेगी. सो
लेट्स फिनिश आवर ग्लासेस, हमारे डिजायर्स जो है, हमारे डीप डाउन विशेस जो है, उसको भी वो एक सेक्रेड प्लेस दे, बिकॉज वो हमें वही जर्नी में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे. सो वट एवर वी विश टू मैनिफेस्ट, वट एवर वी विश टू डिजायर, वट एवर वी वॉन्ट टू क्रिएट इन दिस लाइफ, to give it that sacred place of, holding it with reverence, holding it with love, and giving it that space. So we'll look at the creation process little deeper today. Kanchi, you can read. First is imagine. Use your mind to focus on and imagine what you desire. Imagine yourself being with your desire. Imagine yourself doing things with your desire. Imagine yourself having your desire. Second is feel. At the same time, as you imagine, you must feel love for what you are imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. Your imagination connects you to what you want. Your desire and feelings of love create the magnetism, the magnetic power drawing your desire to you. This completes your part in the creation process. Third is receive. The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, events, and people to give what you love to you. Whatever you desire, you must want it with all your heart. Desire is love, and unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want as an athlete. You must really desire what you want. Desire is love, and unless you have a burning desire in your heart, you will not have enough power to harness the force of love. You must really desire what you want. As an athlete desires to play a sport, a dancer desires to dance, a painter desires to paint. You must desire what you want with all your heart, because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you love. Yes. Thank you, Kanchu. Thank you. So yesterday briefly we saw कि हम ये प्रोसेस नोइंगली अननोइंगली हर एरिया में कर रहे हैं, चाहे वो चीजें हमें चाहिए या नहीं चाहिए. अभी हम हमें जो चाहिए उसके लिए ये कॉन्शियसली प्रोसेस में जा रहे हैं. तो लेट्स फर्स्ट टेक सम टाइम टू जस्ट डिकोड द प्रोसेस, व्हाट इट इज सेइंग. पहले तो इसके तीन पार्ट्स है. फर्स्ट वी इमेजिन व्हाट वी वांट. सेकंड, वो इमेजिनेशन के हिसाब से वी फील व्हाट वी वांट. एंड देन थर्ड पार्ट इज टू रिसीव व्हाट वी वांट. और हमारा काम सिर्फ पहली दो चीजों में है. तीसरे में हमें वो दी जाएगी. हमें बस होटल में जाके ऑर्डर प्लेस करना है, एंड वो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए. सो what is order placed? To know really what we want, to have that clarity in our mind, in our life कि मुझे क्या चाहिए. और वो पैसा क्या है is the frequency. Do I have that frequency to match that and with that intensity? अगर 500 की डिश है और अगर मेरे पास 50 रुपए है तो मुझे वो डिश नहीं मिलेगी, या मुझे उसकी कोई और कीमत चुकानी पड़ेगी. सो वो मेरे पास जितने की डिश मैं चाहती हूँ, जो क्वालिटी की डिश मैं चाहती हूँ, उस लेवल की फ्रीक्वेंसी मेरे पास है कि नहीं. एंड थर्ड इज दैट ओपननेस टू जस्ट रिसीव इट. सो वी लुक एट इट. द फर्स्ट इज इमेजिन. हमें हमारे माइंड में वी हैव टू यूज आवर माइंड टू फोकस ऑन एंड इमेजिन व्हाट यू डिजायर. इमेजिन बीइंग विथ योर डिजायर. इमेजिन योरसेल्फ डूइंग थिंग्स विथ योर डिजायर. इमेजिन योरसेल्फ हैविंग योर डिजायर. सो मुझे ये चाहिए नहीं है. हम काफी बार हमें कुछ नहीं मिलता है बिकॉज हम उसमें अटक जाते हैं कि मुझे ये चाहिए. बट हियर व्हाट दे आर सेइंग, मुझे वो ऑलरेडी मिल गया है. इमेजिन बीइंग विथ योर डिजायर. इमेजिन हैविंग योर डिजायर, बीइंग वन विथ इट. सो जो भी चाहिए, अगर अगर सक्सेस चाहिए, यू सी ऑलरेडी योरसेल्फ बीइंग सक्सेसफुल. बिकॉज अगर हम सक्सेस चाहिए बोलेंगे तो यूनिवर्स सिर्फ उसको चाहिए पे ही रखेगा. वो कभी हमें नहीं देगा. सो
वो इमेजिनेशन ऐसी होनी चाहिए दैट आई एम ऑलरेडी लिविंग दैट, आई एम ऑलरेडी फीलिंग दैट, आई एम ऑलरेडी दैट सक्सेसफुल भूमि, दैट वेरी हैप्पी फुलफिल्ड भूमि। वो होगा तभी नहीं, वो अभी, वो मिलने से पहले। सो दिस इज द क्रक्स। जब भी हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए इमेजिन नहीं करना है, मुझे वो मिल गया है और मैं वो ऑलरेडी जी रही हूँ, वो इमेजिन करना है। So imagine yourself doing things with your desire. Imagine yourself having your desire. Imagine yourself being with your desire. So this is actually three stages of everything: being, doing, and having. First, we have to be what you want. Same with love, first I have to be loving. Then my actions will show that love. And then people may shower back that love to me. Same, first I have to be successful. And being is a very personal, very internal process. Then my actions will show that success, and then I will do more successful things. Same, first I have to feel rich. पहले जो भाव है, पहले जो abundance mindset है, वो मेरे अंदर, in my being, it has to be created. फिर मेरे जो एक्शंस होंगे वो more abundant होंगे, and then life will shower more abundance back. Like I remember my dadi, like when they came from Kutch, probably they had to sleep on streets, they will live, and soon they moved to the smallest and smallest of house you could imagine. एंड बट पहले से ये एक भाव था, टू जस्ट गिव, टू गिव, टू गिव। खुद के पास पैसे नहीं है खाने को, बट दे रहे हैं, लोगों की शादी करा रहे हैं, दे आर जस्ट, दे हैड दिस माइंडसेट ऑफ गिविंग विदाउट द मनी इवन बीइंग विद देम। एंड later the life flooded with the kind of money that they could not even imagine. Later they were flooded with circumstances they couldn't even imagine. I remember once, घर पे, like I was just serving something, and कुछ सब्जी कम हो गई थी, and मैं just वहां पे बोलने गई, अरे वो सब्जी नहीं है, and my दादी is like, don't say that, just say जिज्जो आए. So in Kutchi, जिज्जो आए means बहुत है, बहुत है. And I'm like, क्या क्या बोल रहे हैं यार, अरे है ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं बहुत है, but probably they knew these secrets that we don't say what is, we say what we want. ये सब हमारे शब्दों में है, ये सब हमारे संस्कार में है, बट वी जस्ट couldn't ever connect that. So let's start saying what we want as it is. वो है ऑलरेडी, वो हम है, ना ही हमें चाहिए, क्योंकि हम चाहिए में अटकेंगे तो पूरी जिंदगी चाहिए में निकल जाएगी। वो है में अटकेंगे, एंड वी विल सी। अगर मैं बोलूंगी ना आई एम रिच, आई विल स्टार्ट सीइंग थ्रू आउट माई लाइफ वेयर ऑल आई एम रिच, बिकॉज पैसा इज नॉट इन पैसा, इट्स इन माइंडसेट। आर वी इन दैट अबंडेंट माइंडसेट कि बहुत है तो फटी जेब में भी बहुत मिलेगा, बहुत लगेगा, नहीं तो तिजोरियां भरी होगी तो भी अभाव रहेगा। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ इमेजिनेशन इज इन बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। जो हम चाहते हैं उसको ऑलरेडी पहले अंदर क्रिएट होगा, फिर हमारे एक्शन में आएगा और फिर हमें मिलेगा, उल्टा नहीं होगा। सो इमेजिनेशन इज वो ऑलरेडी हो चुका है। द सेकेंड पार्ट दैट वी हैव टू डू इज टू फील इट। At the same time as you imagine, you must feel love for what you are imagining. I remember एक टाइम था जब I wanted to do the work that truly brings me alive and makes me happy. But उसके लिए मैं जो फील करती थी वो डर था। मुझे लगता था ऐसा काम ही नहीं मिल सकता है, मुझे ऐसी कोई चीज ही है ही नहीं पॉसिबल। तो म, उसमें जो फीलिंग मैंने डाली वो डर की डाली, तो मुझे काफी साल लग गए टू कम टू एनीथिंग दैट आई लव, टू फाइंड दैट मिला। बट वो जो चीज शायद कुछ दिन की हो सकती थी, उसमें साल लग गए। सो द फीलिंग इज वेरी क्रूशियल इफ वी आर एडिंग द राइट फीलिंग इन टू दैट. So at the same time, you must feel love for what you're imagining. You must imagine and feel being with your desire. You must imagine and feel doing things with your desire. You must imagine and feel having your desire. मुझे चाहिए नहीं, मुझे मिल गया है और मैं ऑलरेडी वो जी रही हूँ, मैं ऑलरेडी पैसे उड़ा रही हूँ, मैं ऑलरेडी अपना सक्सेस स्प्रेड कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी अपने बेस्ट ट्रैवल्स पे जा रही हूँ। और व्हाट आई विल फील, अगर ट्रैवल सोच के मुझे डर फील हो रहा है, देन आई एम एडिंग डर, एंड वो चीज मुझसे दूर चली जाएगी। बट अगर मैं वो लव फील कर रही हूँ तो वो चीज मेरे पास पास आएगी। एंड वी कैन ओनली फील लव व्हेन वी ऑलरेडी सी इट हैज ऑलरेडी हैपेंड। तो चाहिए निकाल देना है, हो गया है में आना है। दैट्स व्हाई ग्रेटिट्यूड इज पावरफुल, बिकॉज जो चीज हम मांग रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे लाइफ में है। जब वो अक्नॉलेज होने लगेगी तो वो हमारे रास्ते खोल लेगी। सो ग्रेटिट्यूड इज अ सिंपलर वे ऑफ रीचिंग दिस स्टेट, इन अ डिफरेंट वे। एंड योर इमेजिनेशन कनेक्ट्स यू टू व्हाट यू वांट। जब हम
मैं ऑलरेडी वो हूँ उस पे जाऊंगी, तो मैं वो मेरी वो फ्रीक्वेंसी पे आ जाऊंगी जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, और वो फ्रीक्वेंसी पे तो मैं वही हूँ ना। तो वही एज अ फास्ट हाईवे सब चीजें मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। The desire and feeling of love creates the magnetism, the magnetic power drawing your desires to you. This completes your part in creation process. So अगर हम एक बार वो frequency पे touch हो गए, then again everything is magnet, so it will keep drawing back, drawing back, drawing back all that we want. बस हमें वही करना है, जो मुझे चाहिए वो imagine करना है, like I already have it, to be that, to do that, and to have that, and feel करना है उसके लिए any above the line emotion you can feel, satisfaction, hope, enthusiasm, joy, love, happiness, gratitude, जो डाल सको, but it has to be above the line. Below the line जाएगा, then we will see what we are being is fear, what we are being is resistance, so what we will do is more fearful things, and what we'll get is more fearful things. So what we are being is what we are getting. So being is the answer to everything. We have to be that first. So अगर हम जब सपने देख भी रहे हैं, we seeing it as बस थोड़ा एक टाइम शिफ्ट कर लिया है, पर यहाँ पे तो है ही। और अगर हम ये लाइफ में देखेंगे तो भी हमें दिखेगा why we are already happy, why we are already successful and rich. And then third part is receive. The force of love will work through the visible and invisible forces of nature to bring what you desire to you. It will use circumstances, event, and people to give what you love to you. ये लाइफ का अल्टीमेट पावर है, इसके पास इतने सोर्सेस है, इसके पास इतने कनेक्शंस है, इसके पास इतने वेज है कि हम सोच भी नहीं सकते. वी कांट इवन बिगिन टू फैथम. वो एक लाइन है कि कुछ तुम अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुटाने में शामिल हो जाएगी. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल आवर लाइव्स. बट इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज उसको इतने दिल से चाहना है, उसको इतने विथ ऑल आवर हार्ट. वी नीड टू हैव दैट. हाँ चाहिए, हाँ चलेगा, नहीं नहीं चाहिए, नहीं है, मिलेगा ही, वो मेरा ही है, मैं ऑलरेडी वो जी रही हूँ. So many actors and all, before they even had that, they are like practicing in front of the mirror. Oh, I want Emmy, I want Grammy, I want this, I want that. So because somewhere they knew ये तो मैं हूँ, बस थोड़े टाइम की कमी है कि वो होने में थोड़ा जो समय लगता है. जब हम सीड डालते हैं, जब एक फार्मर सीड डालता है, उसको पता है थोड़े टाइम की कमी है कि उस पर क्रॉप आएगा. पर अगर उसको क्रॉप नहीं दिख रहा है तो ही वोंट बी डिजेक्टेड, ही नोज ये तो होना ही है, ये तो आना ही है. तो बस जो भी चाहो पूरे दिल से चाहो. और डिजायर इज लव ऑल्सो. जैसे मैग्नेट है और हमारे अंदर वो पावर है, तो हमारे अंदर वो पावर खुद ही की तरफ हमें खींच रहा है. यू नो एवरीथिंग इज लीडिंग अस टू दैट पावर. अगर ये पूरा पावर है और हमारे अंदर भी है, तो एवरीथिंग इज लीडिंग अस टू लव. वो हमें उसकी तरफ हर तरह से खींचे जा रहा है. डिजायर इज ऑल्सो वन वे. सो वी शुड थैंक दैट डिजायर फॉर अगेन बीइंग अ टूल टू कनेक्ट अस विद दैट पावर. And unless you have a burning desire in your heart, it is not enough to. तो वो दिल में वो प्यार बस भर के होना चाहिए, and then it has to manifest. You must really desire what you want, because as a, like जैसे कि क्रिकेटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, they love what they do, they love it. मतलब उनकी जिंदगी में ह्यूमिलिएशन फेस करेंगे, फेलियर फेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, बट फॉर देयर लव फॉर देयर आर्ट इज सो मच that they will keep going at it. It doesn't matter what people say. It doesn't matter. Their love for that thing wins. तो जैसे एक एक्टर को एक्टिंग के लिए प्यार है, एक डांसर को डांसिंग के लिए है, एक पेंटर को पेंटिंग के लिए उसका पूरा मन पूरी शिद्दत से वो चाहता है, वैसे ही हमारे डिजायर, हमें अपने डिजायर को वो शिद्दत देनी होगी. सो जब वो हमारे रियल डिजायर होंगे ना, वो शिद्दत नेचुरली आएगी. We also have to see what is it that truly brings that in us. So you must desire what you want with all your heart, because desire is a feeling of love, and you must give love to receive what you want. वो आएगा फिर खुश नहीं, पहले खुशी तो वो आएगा. Being first, doing first, and then having it. Yes, Kanshu. Whatever you want to be in your life, whatever you want to do in your life, whatever you want to have in your life, the creation process is the same. Give love to receive love. Imagine it, feel it, receive it. When using the creation process, imagine and feel that you have what you want already,
and never deviate from that state of being. Why? Because the law of attraction copies whatever you give. So you must imagine and feel having it now. If you want to lose weight, then give love by imagining and feeling yourself with the body you love, instead of imagining and feeling that you are overweight every single day. If you want to travel, then give love by imagining and feeling yourself traveling, instead of imagining every day that you don't have the money to travel. If you want to improve yourself in a sport, acting, singing, playing a musical instrument, hobby, or in your job, then give love for what you want to be by imagining and feeling whatever it is you would love to be. If you want to be, if you want to be So we will just look at what this is. So जो भी हमें चाहिए, whatever we want to be, do or have, यही process है. You know, we have to start backwards. Like probably, I didn't imagine doing this now, but let's just take 1 minute or 2 minutes. Let's just close our eyes and let's do this backwards. कि हमें life में last में क्या चाहिए, हमारी आखिरी moment क्या चाहिए. जब हम ये दुनिया छोड़ रहे हैं, when we are leaving this, you know, how we want to be, what we want to do, because जो हमें तभी फील करना है वो इमोशन से हमें हमारी पूरी लाइफ भरनी है, तभी वो आखिरी मोमेंट पे वो इमोशन आएंगे. अगर मैं पूरी जिंदगी सैड रही, लड़ती रही, झगड़ती रही, और मेरी मौत अच्छी नहीं हो सकती. यू नो, इट्स अ प्रैक्टिस फील्ड के पूरी जिंदगी मैं हंसती रही, खिलती रही, या एटलीस्ट लास्ट के कुछ साल में हंसती रही, खिलती रही, खुश रही, देन probably जब वो most, like you know, most innate feeling जब हमारी बाहर आएगी in that moment will be what we have practiced for years. So I feel everything is in service of, you know, everything that we are doing as living is in service of how we will die. You know, we all want to die better, to be, to die happier, to die fulfilled, to die feeling that yes, you know, it was worth my time. एंड उसी के लिए हम नोइंगली अननोइंगली सब करे जा रहे हैं, सब करे जा रहे हैं. बट व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सेइंग, जो तुम आज फील कर रहे हो, जो इम्प्रिंट्स तुम आज फील कर रहे हो, वो तुम्हारी लास्ट घड़ी में आएंगे. सो हमें, वी कैन गो बैकवर्ड्स एंड सी मुझे वो लास्ट, मेरी घड़ी में, लास्ट कुछ महीनों में, लास्ट कुछ साल में मुझे क्या फील करना है, और वो, और अब का जो हमारा जर्नी है उससे वो फीलिंग से हम फुलफिल करें. इज इट मेकिंग सेंस? किसी को इसमें कुछ सवाल है? अगर मुझे खुश मरना है, अगर मुझे फुलफिल्ड मरना है, अगर मुझे हैप्पी मरना है, तो मुझे अब से मरने तक सारी प्रैक्टिस में वही डालना होगा, वेर आई एम हैप्पी, वेर आई एम खुश, वेर आई एम फुलफिल्ड. So let's ask ourselves how we want to die, and depending on that, we can see how we want to live. And we have to practice those emotions every day in every moment. Let's just take this time to close our eyes, just connect with ourselves, just connect with our desires. Ask ourselves how I want to live and how I want to die. You know, क्या मुझे चाहिए मेरी life से. Let's just take 30 seconds, close our eyes with that silence and connecting with us. Imagine yourself in your last months. What are you feeling? What are you saying? How are you being? What are you feeling? Are we in absolute love and gratitude of life for giving us this chance, this privilege, this possibility? A life so filled with love and miracles and magic and beauty everywhere. कि हम लाइफ से अभी भी लड़ रहे, झगड़ रहे, चिढ़ रहे, थक रहे, हार रहे, जज कर रहे. The choice is ours. It was always ours. Thank you all. We can keep thinking about it whenever we get time. How we want to die, and depending on, we can decide how we want to live. I think
not longer sharings, but maybe two words, three words of how we want to be in last months or last days of our lives. Whatever is coming, people can share. मेरे लिए जो words आए were, I think, happy, fulfilled, grateful, and like, last one, the best one was coming to me. Okay, my guru is promising that, this will be the last one. And I think my promise to myself is that I'll make it the best one. So I was present to that. थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को उधर तक पहुंचने में भी। अभी उधर तक मैं नहीं पहुंची, वो थॉट तक नहीं पहुंची अभी। You're on mute. तक अभी नहीं पहुंची, Okay, मतलब ठीक है, हाँ, got it, got it. थोड़ा टाइम देना। तो ठीक मतलब रोज है। का प्रैक्टिस के बाद वो थॉट आएगा, मगर अभी नहीं ठीक है, कैसे आएगा। जीना है, कैसे जीना है। हाँ, जीना है, वो तो बहुत सपने हैं। उसमें तो मैंने देखा करके कि मैं ये करेगी, मतलब पहले तो यही था करके मैं कि मैं ये हो गई अपना। मेरा जो डिजाइनर कर रही है ना, मैं ब्लाउज वगैरह सी रही है ना, तो उसका ही पहला थॉट वही आया करके कि मैं हो गई है वो। गॉट इट। फैशन डिजाइनर हो गई है, हाँ। और अगर और आप आजू फैशन, बाजू से, हम्म, आजू बोलो। बाजू सब लड़की लोग सब मेरे इधर आजू बाजू पूछ रहे हैं मेरे को, मैं ये क्या करूँ, ये क्या करूँ। पहला थॉट मेरा वही है। और तो जब आप फैशन डिजाइनर हो जाओगे तब आपको कैसा फील होगा। हाँ, वो देखा, मैं वही बहुत बहुत खुश हूँ ऐसा कि मैं हो गई हूँ। वही वही हो कि हो गई हूँ, और आजू बाजू सब मेरा ऐसा बड़ा डेस्क है, और सब आजू बाजू लड़की लोग हैं, और उसको भी सिखा रही है, वो मैं बोल रही है वो, उसमें ही मैं थी, तो आगे तक नहीं गई। गॉट सबसे इट, आगे। परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट, दैट इज परफेक्ट। एंड सो अगर आपको वो बनना है तो उसके लिए जो आप फील करोगे, जो आप बोल रहे हो बहुत खुश हो, उसका अभी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी से रोज वो दोगे तो जेरोक्स मशीन जो है ये पावर, वो रोज वो आपको वो तरफ पहुंचाएगा, वो आपको वो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करेगा। बिकॉज कुछ भी पाने से पहले वो फीलिंग्स पहले अपने अंदर हमारे बीइंग में क्रिएट करनी है। सो नाउ योर वर्क इज, जो आप तभी फील करोगे वो आपको अभी से फील करना है, तो आप वो फैशन डिजाइनर बैना मासी के फ्रीक्वेंसी पे आओगे। एंड फिर वहां पे चीजें होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। So, yes, whatever we imagine that last part to be, we have to first tune into that frequency to then make it happen and open it for all of us. So I just wanted to display that कि जो emotions हमें चाहिए उसकी बस आज से practice, वो होगा तब नहीं, पहले से। So same, अगर हमें weight lose करना है, we have to give love by Mega, you want to share something? You're on mute though. Just yes. Yeah. So, yes, I would like to do a small sharing. As far as जो last moment है, उसमें I also had similar feelings of being very fulfilled, very joyful, and being able to just move into that abysses of unknowingness very willingly, and not feeling very attached with whatever I had accumulated all my life, but I've enjoyed all my life, feeling very fulfilled with whatever I've had and enjoyed, but ready to drop it at that final moment and just move on. So that is what I felt. But one another question that comes to my mind is that uh, when it comes to imagining, now that I'm consciously imagining, when you said, so this is what I visualize and see for my last moments. But there are most of the time we are not unless we put in effort like this that we are doing now, we are not conscious of what we are imagining. It's like imaginations or like thoughts come and go, even imaginations are happening. So मेरे साथ particularly I would like to share that एक ना there is this very familiar emotion that I go through, which often manifests into imagination and very series of a series of sequence of thoughts in my mind, and I sometimes unconsciously stay with that for like 5 to 10 minutes. That's a lot of time. It's like I just don't want to come out of it. It's like that because it is so familiar, and it is so feels like home. I don't know why, and it's a very though it's a very very depressing emotion.
Like, for example, not example, I'll precisely try to articulate what exactly the emotion is. I think as a child, when I was growing up, I used to feel left out and abandoned many times. Sometimes by my parents, sometimes by my friends. So there's this feeling of being abandoned, not looked out, not looked after, and at the same time, feeling of being victim to the situation, which is like not really directed at you, but I kind of create it in my mind that it's deliberately making me feel all these emotions. So, this feeling of being victimized, this feeling of being left out has been very, I must have picked up somewhere, I don't know when, how, where, while growing up. But it kind of grew within me over a period of time until I really became aware of it. Not fully aware of it even still, but now it doesn't happen very often, but it does still happen, wherein I create a series of thoughts and imaginations of similar situation wherein I'm in a similar kind of situation, and it takes me a while to come out of it. And as I said, it kind of lasts for 5 to 10 minutes sometimes. So, what about these unconscious imaginations of negativity that we are creating? In spite, we want good things for ourselves. We want, as I said, when I'm consciously imagining my So, last moments, I see myself fulfilled. Megha, But yeah, are you sitting somewhere? I'm in, I'm in the Yeah. canteen area. Okay. So Yeah, just I take can't. a bit. First of all, really acknowledge you on your first session, opening up yourself so beautifully and so vulnerably. It takes courage. And I also want to acknowledge you, the consciousness, the awareness that you already have. Because last few chapters, we were seeing that who we are or what we are is probably an impact of the first few years of our lives, our childhood. And वहां से एक पर्सनालिटी क्रिएट हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है, एक ऑटोमेटिक रेपिटेटिव प्रोग्राम क्रिएट हो जाता है, जो फिर पूरी जिंदगी हमारी लाइफ चलाता रहता है। बिफोर एनीथिंग हैपेंस हम क्रिएटर है, बट हमारा एक्सपीरियंस विक्टिमहुड वाला रहता है। सो यू लिटरली समड अप लास्ट फ्यू चैप्टर्स इन अ वे, and you're very aware that you are creating it all this time, you are creating your life all this time. So it is, probably that is the biggest step, that we are creating it. But simply जो इन्होंने बोला that जो हम emotions universe को देंगे वो universe वापस देगा. We are aware that we are feeling abandoned, but what we are giving is abandonment, and what universe will give back is more circumstances of abandonment. And yesterday also we saw, like, शादी बोलो, success बोलो, money बोलो, they are all great magnifiers. वो जो हमारे अंदर है वो चीजों को और मैग्निफाई कर देंगे, वो हमारे चीजों को और बड़ा बना देंगे. So can we just look at what the need of that child would be who is feeling abandoned, who is not feeling seen or not feeling appreciated? What would be the need of that child? I think the need would be the need of acknowledgement, the need of, basically attention seeking attitude that most of the kids have. Ah. He doesn't agree, but probably the need is of being seen, right? And what do you we again we look deeper into, being seen means being loved. So हर चीज का नीड इज कमिंग टू बीइंग सीन एंड बीइंग लव्ड. यू नो हम हर चीज कर रहे हैं, इट इज लीडिंग अस टू लव. हमारे पास एंगर भी आ रहा है, इज बिकॉज इट इज शोइंग वहां पे अंधेरा है, वो एरिया में लैक ऑफ लव है. सो व्हाट वी रियली वांट इज लव, व्हाट वी रियली वांट इज सेफ्टी. बट तो मुझे चाहिए सेफ्टी, बट मैं जो दे रही हूँ वो अबैंडनमेंट है, वो नॉन एक्नॉलेजमेंट है, तो मुझे वही 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 मिलेगा. सो देर इज अ डिस्कनेक्ट विथ बिटवीन व्हाट आई वांट, what I'm imagining, and I'm feeling. So here what I'm being is abandoned. So what I will do is more abandonment, and what I will get is more abandonment. So now if we want more acknowledgement, more happiness, we have to be that first. And somewhere, Megha, now you have become that person who doesn't give herself that acknowledgement. So you have to be that first for yourself in your life, where all in your life you can start doing that for yourself. You have to generate that first for yourself, for life to reflect that back to you. So because ये एक लॉ है, अगर हम लॉ के साथ नहीं चले, then it will keep working against us. We will look at it a little more probably in the next page.
So be with it. But I hope you're present that life is exactly reflecting back to you what you are giving. Till the time we hold on to that abandonment, we will keep experiencing that abandonment no matter where we go. In our work, in our children, in our husbands, in everywhere we go. So first we have to drop that abandonment story within us, come to safety, come to love, come to acknowledgement, and world will start reflecting. अभी हम बाहर जाके बाहर लोगों को बोल रहे हैं मुझे दो, they can't give you because you haven't created it. Even if when they are giving it, we won't be trusting enough or open enough to receive it. We will convert it to our past, we will convert it to our abandonment. So that's why it is very important first to drop the emotions of the past and move them to love. Right now, in this moment, inviting you to go back to the chapters and listen to the recordings, it will really help you. And this is how we keep repeating the past. So, to stop repeating it, we have to drop those emotions first and convert them to love. I will again, in the next page also, there is another opening for that. We will look at that. But for now, we can end this discussion here. Okay. So if we want to lose weight, we have to then we have to give love by imagining and feeling ourselves with the body we love instead of imagining and feeling that we are overweight every single day. If we want to travel, then we have to give love by imagining and feeling yourself traveling. तो जो हमें चाहिए वो हम already है, वहां से शुरुआत करनी है. मैं already पतली हूँ, मैं already fit हूँ, मैं already travel कर रही हूँ, मैं already अपने ड्रीम स्पोर्ट्स खेल रही हूँ, एक्टिंग कर रही हूँ, जो भी हमें चाहिए, वी हैव टू बी वन विथ इट. बिफोर बीइंग एन एक्टर आई हैव टू फील द एक्टर. बिफोर बीइंग रिच आई हैव टू फील रिच. बिफोर बीइंग समथिंग आई हैव टू, बिफोर हैविंग समथिंग आई हैव टू बी दैट फर्स्ट, इज व्हाट दे आर सेइंग. वो बीज हमें पहले डालना है, तो उसका ट्री उगेगा और तो उसका फ्रूट आएगा. So if we want a better marriage or better relationship with anybody, then give love by imagining and feeling what it would be like to have that relationship. So again, शादी भी अच्छी चाहिए, तू बदल और शादी अच्छी होगी नहीं. We have to first tap into that. Oh, I am already in a great marriage. First उसका seed अंदर create होगा. First उसका imagination अंदर create होगा. And then it will slowly start manifesting. When I shifted, every area of my life shifted. When मेरे अंदर एक ठहराव आया, where मेरे अंदर एक शांति आई, where मेरे अंदर एक acceptance आया, हर area of life shift हुआ. उससे पहले मैं जाके हर area को shift करती थी, and it was just a chaos. So हर shift, हर बीज पहले अंदर होगा, फिर धीरे 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 उसके fruits बाहर आने लगेंगे. So yesterday's assignment was to look at faith is to believe that which you do not see, and the reward of this faith is to see that which you believe. So I think one of the secret sauce of all that we are doing, for me, it comes down to faith. Like for me, it comes down to कि faith है तो above the line emotions शायद naturally आएंगे. So I want to hear from all of us that what faith means for us, or that I had put those questions that, what stops us being one with faith. और अगर हम वो faith के साथ एकजुट हो गए, अगर हमें लाइफ में वो विश्वास आ गया, अगर हमें ये पावर में वो विश्वास आ गया कि इट इज वर्किंग फॉर अस, ये पावर मेरे साथ है, देन लाइफ में क्या ओपन अप होगा. So I would love to hear from probably all of you what this faith means for you. And what is the place of this faith in your life and in your heart? ये श्रद्धा, ये आस्था हमारे लिए क्या है? Do we trust life or we don't? See, my problem, Bhumi, is that I trust life, but I do not understand the word faith. Like, I know these are sayings. I do feel like in the end, सब अच्छा ही होता है. मतलब, this is ingrained in us, but I think somewhere I'm still not able to. I still feel a very disconnect with my somewhere I feel a major disconnect. I don't know how, why. Got it. Got it. So there is that opening that life में अच्छी चीजें होती है और सब अच्छा होता है, but there is that misalignment still. Thank you for acknowledging and sharing, Pariti. Thank you. Yes. I don't know actually, to be very honest. What faith means for you? Faith is something what I perceive as is
something which you can deeply root to. It can also change, as it need not be something, but something from within which you feel uh, very aligned with. Got it. So it's a rooting and an alignment, or and something within you that is present. Yeah, something like an inner voice which is very strong. It's not like something like your chit chatter in your heads, like constantly we questioning us and all, but something which makes you really give you that therav and sthirta and very calm, but yet very strong. Got it. Thank you. Thank you for sharing. Megha, what does faith mean for you? Bhumi, I think I was on like similar as Paridhi said. मेरा भी almost same है. Like uh, faith doesn't come to me intrinsically. Uh, Maybe there's too much of mind orientation that I have, but sometimes there is one conviction, not exactly conviction. Uh, I don't know how to articulate it. But in day-to-day basis, there is no space for faith, to be very honest. On my day-to-day conduct, I'm very mind-oriented. I don't leave anything to chance or uncertainty. I would want to do it myself. But at the same time, I have also uh, very deep-rooted, you can say, it can kind of faith only, you can say. But there's a very strong conviction within that. Something or the other will happen and things will fall in place. So everything will fall in place. This conviction I have, I don't know if we'll call it, if we'll call it faith or not, but there's this conviction that everything will fall in place, but efforts all I have to do. So there is nothing on faith that I leave. So that's my take. Got it. Got it. Thank you for sharing so openly. And I acknowledge that. And probably that's why a lot of things are falling in place and working. And still at the same time, there is a lot of other uncertainties and upheavals as well. And both exist together and both are serving its beautiful purpose and leading us to love in the end. So, yes, thank you for sharing. मेरा ये हुआ कि मेरे को विश्वास पे विश्वास बढ़ता है। हाँ, हाँ, मेरे को विश्वास रहता ही है कि ये मेरे पास आ गया है ऑलमोस्ट। और बहुत ऐसी चीजें हुई कि जो मैं सोच भी नहीं सकती थी उससे भी ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं करके कि जो चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, वो भी, मगर वो क्यों गई ही उसके ऊपर बाद में पता चलता है कि इसकी वजह से वो नहीं, तो और विश्वास बढ़ गया मेरा। वो मेरी लाइफ में बहुत हुआ है। और कभी डाउन जाती है तो कभी एक दिन के लिए, कभी आधा दिन के लिए जाती है डाउन, वापस मेरे को वही विश्वास मेरे को वापस लेके आता है। वो मेरा एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। गॉट इट। तो आप जो भी कर रहे हो वहां पे विश्वास लाइफ में बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बिकॉज आप हाँ देख रहे हो हाँ कि सब आपके लिए ही हो रहा है और सब अपने लिए अच्छा हाँ ही हो रहा हाँ, जो जा रहा है मेरा लाइफ से बहुत कुछ जा रहा है। और उसके बाद जो मिल रहे हैं ना, वो जो सोच भी नहीं सकते उससे परे है। है। गॉट तो इट। शायद हाँ, 4-5 साल, 4 साल के बाद वो बताएगी ही मैं कि मेरे साथ क्या गया और क्या मिला। वाओ। मतलब बहुत बहुत मतलब अमेजिंग वो लाइफ भी थी, और अमेजिंग ये लाइफ भी है जो मिला। वो बहुत बहुत मतलब नहीं बता सकती है कि किस तरह कैसा मिला मेरे को, सब सब कुछ वाओ। थैंक यू सो मच है। फॉर शेयरिंग दैट। इसके थैंक लिए यू। विश्वास पे विश्वास बढ़ गया है। यस। तो ये फेथ ग्रो हो रहा है। हाँ। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग ओपन टू फेथ एंड शेयरिंग दैट विद ऑल ऑफ अस। यस, लाइक बचपन से मेरा एक नेचर रहा है कि आई कैन डू एनीथिंग। मेरी माँ मेरे साथ है, देन आई कैन डू एनीथिंग। और अभी तक जब वो मैंने देखा, जो सोचा, जो सुना, जो किया, लाइक आज नहीं तो कल वो 100% हुआ, बट स्टिल आई कैन डू एनीथिंग। लाइक जो मैंने सोचा भी नहीं है कि ये मैं इतना कर सकती हूँ, still, वो एक लिमिट से बाहर मिला है मुझे,
जो है मतलब जो करना चाहा वो 100% किया, बट आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से के आई कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग इफ वी थिंक। वाह, थैंक यू फॉर शेयरिंग कि वो साथ फील होता है एंड वो हमेशा रिजल्ट्स भी दिखाता है। थैंक यू। It's a tricky one for sure. I, for one, have always been pragmatic. हर चीज प्लानिंग से एंड लाइक जितनी भी प्लानिंग करो, आई थिंक लाइफ हैज इट्स ओन प्लान्स टाइम एंड अगेन. आई हैव विटनेस दैट. तो मॉम कीप सेइंग कि जिसने ये लाइफ दी है वो संभालेगा भी. हैव फेथ, शी कीप्स टेलिंग मी. कभी कभी मॉम को वही बोलती हूँ, मम्मी सुनने को सब अच्छा लगता है पर टू इम्प्लीमेंट इट टेक्स टाइम. तो मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, टेक योर टाइम ना, देयर इज नोवेयर टू गो, हम यहीं पे है. तो या देयर इज डेफिनेटली सम फेथ देयर एंड लाइफ के एक्सपीरियंसेस रीइंफोर्स करते रहते हैं, रिमाइंड कराते रहते हैं, हैव फेथ, हैव फेथ. आज हम घर से बाहर निकलते हैं, हमारे पैरों के नीचे जमीन है, सर के ऊपर आसमान है, ये तो हमने कैलकुलेट नहीं किया था, ये तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ही चल रहे हैं. तो है ना फिर भी, तो दैट इज आई थिंक फेथ डेफिनेटली. लवली, थैंक यू कंचू फॉर शेयरिंग. थैंक यू. Gaurav, we will go over few minutes today, so requesting you all to just be patient, little more patient as always. But yes, Gaurav. What does faith mean for you? Yes, faith, faith. I mean, before faith, there's a word which is trust, right? तो मेरा मानना ये है कि फेथ से पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए आपकी अपनी एबिलिटीज पे, एंड विद लिटिल बिट ऑफ पेशेंस. तो जब हमें अपने पे भरोसा होता है और थोड़ा पेशेंस होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं, विच इज रेफरिंग टू फेथ. ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के ऊपर छलांग मार देता है ना ऊपर से, उसको पता होता है ये होल्ड कर लेगा. Yes. यही है फेथ. Jump and the next आई मीन पेशेंस और अपने पे ट्रस्ट. तो फेथ ही Got फेथ it. है, राइट? सो इट इज लाइक समथिंग विच इज इनबिल्ट. Got it. Got it. थैंक Thank यू. you. Thank you for sharing, Gaurav. Thank you. Uh, so I think it is very heartwarming to hear from all of us, all of you, what this faith means for you. I think for me, more I get to know, more I realize that we don't know anything. मतलब अगर हमें लग रहा है कि ये पावर बुक से 2 बार करने से 10 बार करने से मैं ये पावर क्या है जान लूंगी, या फिर इतनी बड़ी सृष्टि मुझे शायद शब्दों में समझ आ जाएगी, तो वो नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है. इनफैक्ट जितना जानने जाओ उतना पता चलेगा कुछ भी नहीं पता है. हम कैसे चल रहे हैं वो भी नहीं पता है, हम क्या है वो भी नहीं पता है. यू नो एंड so, of course, I don't know is becoming bigger and bigger and bigger. But with that, I don't know. Another thing that is coming is there is somebody who knows. और वो मेरे साथ है. You know. So, जब it's like मेले में अगर मेरे माँ बाप है, I can enjoy the मेला without thinking about the prize, without thinking about anything. तो ये life में मेरे साथ power है, which has my back, which has got my back, which is here to do everything for me, is here to support me, and is here to be with me through thick and thin. And I think for me that faith is, and I think with this book it's coming more strongly कि ये पावर जो मेरे अंदर भी है और जो पूरी सृष्टि को चला रहा है और मैग्नेटिज्म है, तो वो हर चीज अपने ताकत में कर रहा है, टू कनेक्ट मी बैक टू इट, टू मेक मी वन विथ इट. It's my doubts, it's my questions, it's my control, it's my judgments, it's my excuses for not love that is creating the distance. पर अगर मैं वो ट्रस्ट में वो नोइंग पे आ जाऊं कि उसको और मुझे सेम चीज चाहिए, and I can drop down all that, I know this power is working for me throughout in each second. Because of course I have also gone through so many things where तभी लगता था अरे ये नहीं होना चाहिए, but only looking back I realized that was the best thing that could have happened, that was the best way it could have happened.
So I think just that realizing that life is for me and not against me. Life is working for me in each moment. जो भी मेरे सामने आ रहा है, जो भी मेरे साथ कर रहे हैं, जो भी मेरे सामने circumstances है, they are all for me. And when I see everything around me as for me is leading me to love, I can be relaxed. I can be in that frequency of receiving. I can be in that frequency of enjoying instead of fighting it. So power has got my back. I think the difference between lovemaking and rape is just a very minute difference. It's the same act, you know. But एक कोई जन willingly कर रहा है और एक में extreme unwillingness है. I would want to leave us with that, are we willing in this process of life? You know, and we will only be willing when we love the partner, when we trust the partner. And our partner is this power, is this universe. It is for us. You know, everything it is giving, it is for us. It is in our favor. It is to lead us to love. But when we don't trust this partner, when we don't have faith in this partner, when we think this partner is against us, it will be a very, very cruel process. It will be a very thankless process. So, only choice of leading this life is either because हम नहीं जानते कुछ, हम नहीं जानते क्या होगा. यहाँ पे एक पेज में मैनिफेस्टेशन सुन के हमें नहीं पता है हम वो क्या क्रिएट करेंगे. The reality is we don't know, but the power that is connected with us knows. अब हम उसके साथ मिलके प्यार से काम करेंगे, नहीं तो वो तो कराएगा लड़ झगड़ के, थक हार के, मार मरा के. Willingness, trust is the only question, and that will decide how we will live and how we will die. Please खुद को पूछो, do I trust the power? Do I trust my partner? Our partner, can I love it? Can I trust it? Can I surrender to it? Can I let go? Can I know जो मेरे लिए कर रहा है, जो मेरे साथ कर रहा है, वो मेरे लिए है. It is to lead me to love. It is in service of that. Because faith रहेगा, trust रहेगा, we will be able to be so open to life. We will be able to be so enjoying of life. जहाँ पे भी हमें पेन वूंड लग रहा है, वहां भी इसीलिए पेन वूंड है क्योंकि वहां से लाइट्स आनी थी. So please ask ourselves, how can we be more trusting to our partner? This power. And be one with it so we can create the phenomenal life we all deserve and desire. I will not take questions today. I will just leave you with this question. And I look forward to seeing all of you on Monday for the week 3. And we will look at it more. Monday se we will again change gears. We will go more faster because now things are becoming more self-explanatory. So reading zyada hoga, stories kam hogi, and we'll be open to questions. But yes, when we are one with power, when we are trusting it, and we disconnect with it when we are judging it. But the choice will always remain with us. So I hope we use this choice for us and not against us. And on that, Benamasi, I'll take the question on calls. No questions right now. We'll just end with that. Yeah. Thank you all for being here. Thank you all for being part of this journey. I'm sorry for disturbances today. And looking forward to see you all on Monday. Back with this power, back with all of you. And have a great weekend and enjoy the song. See you all on Monday. Take care. Thank you, Bhumi. Bye-bye. See you. Thank you. Thank you, Megha, for coming.